Bismillahirrahmanirrahim. Now let's move towards paragraph number 3. Paragraph number 3 is the most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of a drug addict. In many countries, including Pakistan, addicts, their families, and friends consider it a taboo to share their problems with others. They feel embarrassed to talk about it for fear of being declared an outcast. This not only makes the cure difficult, but in most of the cases, the addicts die due to lack of timely treatment and counseling. पैराग्राफ की रीडिंग के बाद अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग को पढ़ते हैं और पहला वर्ड है मयर, कार्रवाई, तदबीर means to say step, procedure. Rehabilitation, बहाली, restore. Including, शामिल होना, comprise. Consider, समझना, think about, or you can say ponder. Embarrassed, शर्मिंदगी, ashamed, or you can say abashed. The next word is declared, करार दिया, asserted. Outcast, जिससे ताल्लुक ख़त्म किया जाए, perish, or you can say exile. And the next word is addict, नशेई, और आप कह सकते हैं नशे का आदी. User or abuser. Lack, कमी, shortage, absence. Recovery, बहाली. Returned, gain. Timely, पर वक्त यानी वक्त पर. On time. Counseling, मशवरा. Instruction, or you can say guidance. वर्ड्स मीनिंग की रीडिंग के बाद अब हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं. पहली लाइन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर टू बी टेकन इन दिस रिगार्ड. इस सिलसिले में सबसे अहम गौर तलब अकदाम. इन दिस रिगार्ड एक इडियम है, इसका मतलब होता है इस सिलसिले में. इज द रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी ऑफ अ ड्रग एडिक्ट. नशे के आदी लोगों की बहाली और सेहतयाबी के हैं. The most important measures to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of a drug addict. इस सिलसिले में सबसे अहम गौर तलब इक़दाम नशे के आदी लोगों की बहाली और सेहतयाबी के हैं. In many countries including पाकिस्तान, बशमूल पाकिस्तान, बहुत से मुल्कों में addicts, their families and friends, नशाबाज, उनके अहले खाना और दोस्त, कंसीडर इट अ टैबू, ममनू ख्याल करते हैं. किस चीज़ को? टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद अदर्स, अपने मसले के बारे में दूसरे को बताना. इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, एडिक्ट्स, देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स कंसीडर इट अ टैबू टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद अदर्स. बशमूल पाकिस्तान, बहुत से मुल्कों में नशाबाज, उनके अहले खाना और दोस्त अपने मसले के बारे में दूसरे को बताना ममनू ख्याल करते हैं. वो क्यों ममनू ख्याल करते हैं? अगली लाइन में बता रहा है हमें कि दे फील एम्बैरेस्ड टू टॉक अबाउट इट. वो इस बारे में बात करने से शर्म महसूस करते हैं. फॉर फियर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट, इस डर से कि कहीं उनसे ताल्लुक़ ख़त्म न कर लिया जाए, उन्हें बरादरी से निकाल ना दिया जाए. इस डर की वजह से वो ये चीज़ बताने से शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि दे आर ड्रग एडिक्ट्स, या उनकी फैमिली के कुछ मेंबर जो हैं वो ड्रग एडिक्ट्स के जो हैं शिकार हैं. दे फील एम्बैरेस्ड टू टॉक अबाउट इट फॉर फियर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट. वो इस बारे में बात करने से शर्म महसूस करते हैं और उन्हें डर लगता है कि कहीं उनसे ताल्लुक़ ख़त्म न कर लिया जाए. दिस नॉट ओनली मेक्स द क्योर डिफ़िकल्ट,
ये ना सिर्फ इलाज को मुश्किल बना देता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द एडिक्ट्स डाई, बल्कि बहुत सी सूरतों में नशे के आदी लोग मर जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग। बरवक़्त इलाज और मशावरत के फुकदान की वजह से, यानी कि उसकी कमी की वजह से, बरवक़्त उनको बताया नहीं जाता, बरवक़्त जो है किसी चीज़ की तशख़ीस ना होने की वजह से इलाज जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दिस नॉट ओनली मेक्स द क्योर डिफ़िकल्ट, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द एडिक्ट्स डाई ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग। ये ना सिर्फ इलाज को मुश्किल बना देता है, बल्कि बहुत सारी सूरतों में बरवक्त इलाज और मुशावरत के फुकदान की वजह से नशे के आदी लोग मर जाते हैं। पैराग्राफ की रीडिंग के बाद अब हम इस पैराग्राफ की सिंपल इंग्लिश करते हैं और फर्स्ट लाइन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर टू बी टेकन इन दिस रिगार्ड इज द रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी ऑफ अ ड्रग एडिक्ट। तो सिंपल इंग्लिश है, सम स्टेप्स शुड बी टेकन टू रिस्टोर द हेल्थ ऑफ ड्रग एडिक्ट्स। मैयर के लिए हमने स्टेप्स का वर्ड यूज़ किया, इसी तरह से रिहैबिलिटेशन के लिए हमने रिस्टोर का वर्ड यूज़ किया। वेरी सिंपल। द नेक्स्ट लाइन इज, इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, एडिक्ट्स, देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स कंसीडर इट अ टैबू टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद अदर्स। तो सिंपल इंग्लिश है, इन पाकिस्तान एंड आल्सो इन सो मैनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, drug addicts, their families and friends are reluctant to discuss their problems of drug addiction with others. The next line is, they feel embarrassed to talk about it for fear of being declared an outcast. तो इसकी सिंपल इंग्लिश है, they think it to be shameful to discuss their problems with others. They should be humiliated in the society and thus cast out from home or society. So very simple, embarrassed के लिए हमने shameful का word यूज़ किया और हमने एक सेंटेंस को दो छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है, this not only makes the cure difficult, but in most of the cases the addicts die due to lack of timely treatment and counseling. This thing make the cure difficult. In some cases, the drug addicts even die when they are not provided timely treatment and proper guidance. तो यहाँ पर हमने काउंसलिंग के लिए प्रॉपर गाइडेंस का वर्ड यूज़ किया और एक सेंटेंस को दो छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर डिवाइड कर दिया। ओके, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 3 भी कंप्लीट होता है।